हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो का जो सब टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, उसके लेसन को हम कैसे प्लान करेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है और आप लोगों को पता भी है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपर पार्ट से, जिसमें हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करते हैं। लेफ्ट साइड पे डेट, नेम ऑफ द स्कूल, पीपल, टीचर्स नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड लिखते हैं और राइट साइड पे सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक और ड्यूरेशन। आफ्टर दैट जनरल ऑब्जेक्टिव्स पे हम आते हैं। ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको पता है कि इस सर्टेन सब्जेक्ट को पढ़ाने पे ज़रूर पूरे होंगे। ये आपको मिनिमम 5 लिखने हैं। आप लिखोगे टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, टू डेवलप लॉजिकल एंड डिसीजन टेकिंग पावर इन स्टूडेंट्स, to develop scientific attitude among students, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students. नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो मेजर डिफरेंस होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स में और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में, वो ये है कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिन्हें हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं, वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होते हैं। ओके क्योंकि आपको पता है कि जो लेसन प्लान है वो आपकी प्री प्लानिंग होती है, आप उसे लेके क्लासरूम में एंटर करते हो, तो ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होगा। आपको इस चीज़ को याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ओके यहाँ पे आप जो भी कंटेंट लिखोगे, सेम कंटेंट आपको आपके प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करना है। सो आप यहाँ पे लिखोगे, students will be able to recall the bacterium involved in fixation of nitrogen in leguminous plants. Students will be able to describe nitrogen fixation in atmosphere. Students will be able to explain nitrogen cycle. Students will be able to identify importance of nitrogen in atmosphere. Students will be able to illustrate the steps of nitrogen cycle in soil and atmosphere. नेक्स्ट आपको लिखना है टीचिंग एड्स, जिनका यूज़ आप अपनी टीचिंग प्रोसेस में करते हो। तो ये आपको पता है दो होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। इन जनरल टीचिंग मटेरियल यू विल राइट चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा, और स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल में यू विल राइट चार्ट, मॉडल, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड। साइंस टीचिंग के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो, बट सबसे एप्ट मेथड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। आफ्टर दैट टीचिंग मैगजीम्स, ये आपको 2 लिखने हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। नेक्स्ट प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नाइट्रोजन साइकिल आपको इंट्रोड्यूस कराना है, तो आपको बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से उसे लिंक करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रीवियसली आप लोगों को पता है कि एक जेड पैटर्न होना चाहिए। आप जो क्वेश्चन बच्चों से करोगे उसका आंसर आने पे वो सेम आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में इंक्लूड होना चाहिए। सो वील स्टार्ट। आपको सबसे पहले 3 कॉलम बनाने हैं, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर्स, एक्टिविटी, स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड आंसर। रिमेंबर आपकी ये प्री प्लानिंग है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे ये आंसर करेंगे। सो pupil teacher will show the picture of earth and ask the students what is the layer of air around earth is called. Then they will answer the layer of air around the earth is known as atmosphere. Okay, so the next question, which gases are found in our atmosphere? They will answer nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and other gases. Next question, among nitrogen, oxygen, argon and carbon dioxide, which gas is present in large amount in atmosphere? They will answer nitrogen. Next question, tell about the importance of N2. So that is problematic. तो अब आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे और आप अनाउंस करोगे अपने टॉपिक को, और साथ ही आप लिख सकते हो अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक या स्टेटमेंट ऑफ एम। So students, today we will study about importance of nitrogen, nitrogen fixation and nitrogen cycle. Next is presentation. यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। टीचिंग पॉइंट, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट, एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। Pupil teacher asks students to recall the concept of rhizobium bacteria. After getting various responses from students, pupil teacher explains animals get their nitrogen from plants. But plants cannot get their nitrogen directly from the atmosphere. The air around us is a mixture of gases. Nitrogen is the most abundantly available of all these gases. It is in gaseous state.
However, with the help of certain microbes present in the soil, the atmospheric nitrogen is converted into usable water soluble form. Rhizobium is one such kind of microbe. It is a bacteria that lives in root nodules of leguminous plants, such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. The atmospheric nitrogen gets fixed in the soil with the help of it. In student activity, you will write, students will listen carefully and note down important terms. Blackboard work. Nitrogen fixation is the process of converting the atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds. Nitrogen can be fixed by lightening, nitrogen fixing organism present in the soil, example rhizobium, azotobacter. क्लास लेते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आप बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस करो. Where does rhizobium bacteria lives? They will answer rhizobium bacteria lives in root nodules of leguminous plants. फिर आप बोलोगे very good. Next, nitrogen cycle. Pupil teacher draws nitrogen cycle on blackboard and then explains each step in detail. Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the most essential constituents of all living organisms as parts of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamin. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants. We have studied earlier that certain bacteria present in soil fix nitrogen from atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. Once nitrogen is converted into usable compounds, it can be utilized by plants from soil to their root system. Nitrogen is then used for synthesis of plant protein and other compounds. Students activity में आप लिखोगे students draw the nitrogen cycle in their notebook and try to understand each step of cycle. क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते, या तो आप पेपर में स्टिक कर सकते हो, और वैसे भी आपको इसका पोस्टर बना के क्लासरूम में बच्चों को एक्सप्लेन करना है, तो आप उस पर नाइट्रोजन साइकिल ईजिली बना के बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert nitrogenous compounds to be used by plants again. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in atmosphere remains more or less constant. आपको next लिखना है importance of nitrogen. The major components of all living cells, including protein and genetic element, have nitrogen element. This all living cells require nitrogen. As major component of the atmospheric gas, it helps in making the environment of Earth inert, preventing chemical reaction like fire, etc., and also for sustainability of life on Earth. In students' activity, you will write student will listen and note down. रिकैपिचुलेशन, आपने जो पढ़ाना था आपने पढ़ा दिया. बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास ओवर होने से पहले आपने जो भी पढ़ाया है आप वापस उससे एक बार बच्चों को रिवाइज कराओ. So, in recapitulation, you will write nitrogen fixation is the process of converting the atmospheric nitrogen into nitrogenous compound. Nitrogen fixation can be done by lightning and also by some organism, microbes present in soil, example rhizobium. Nitrogen cycle is a process through which nitrogen is converted into many forms, consecutively passing from the atmosphere to the soil to organism and back into the atmosphere. Nitrogen is required by all living cells. It helps in making the environment of Earth inert, preventing chemical reactions like fire, etc. या आप क्वेश्चन के फॉर्म में भी कर सकते हो. आफ्टर दैट इवेल्युएशन, इसमें आप बच्चों से मिनिमम 5 क्वेश्चन करोगे, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में किया है वो आप यहाँ नहीं कर सकते और होमवर्क में भी सेम नहीं दे सकते. तो आप क्वेश्चन कर रहे हो व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन. Nitrogen is absorbed by plants in the form of A. Ammonium, B. Nitrites, C. Nitrates, D. All. Third, where do rhizobium live? Fourth, our atmosphere has dash percentage of nitrogen gas. Next, when plants and animals die, what happens next? फिर आपको होमवर्क देना है, एक ओपन एंडेड एक क्लोज एंडेड. तो यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया है, नेम द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, and second, what is nitrogen cycle? Draw a neat label diagram. That's all for today. Thanks for watching.
अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.